Dear friends, yesterday we were discussing quiz and we have to discuss the quiz number 3, 4 and 5. So before we discuss the quiz 3, 4 and 5, let's discuss the pericardium meridian. तो पहले हम थोड़ा सा पेरिकार्डियम मेरिडियन के पॉइंट्स की लोकेशन को देख लेते हैं और उसके बाद हम अपनी क्विज नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे. ओके, कैन वी स्टार्ट? रेडी एवरीवन? ओके, गुड. So like we can see there are three meridian here. Lung meridian on the radial side. Okay. The pericardium meridian in the center. And the heart meridian on the ulnar side or the small finger side. So right now we are talking about the pericardium meridian. अभी हम जिस मेरिडियन की बात कर रहे हैं उसका नाम है pericardium meridian, which is in the center of this wrist crease. So if I do like this, I can see my wrist crease here. So if I draw the line, अगर मैं यहां पर I can see if I keep my finger here in the center of wrist, if I do like this, my finger will go in the depression. मेरी फिंगर अपने आप एक डिप्रेशन में चली जाएगी. You can keep your finger in the center here and if you do like this, your finger will fall in one depression. Okay. Actually, if you put your finger here also you will feel very hard and tendinous structure. यहाँ भी आपको बड़े hard और tendinous structure मिलेंगे. So the pericardium meridian is passing in between the tendon. Keep your finger here somewhere and just do like this. Are you feeling the tendon this side and this side? एक कड़क रस्सी की तरह फील हो रहा है. तो pericardium meridian is crossing this part in between the tendon. Now we are coming in the center of the wrist. If we do like this, automatically our finger will fall in between the tendons. That is the location of the pericardium 7. I will show you the location of this point, so you will be able to understand very clearly. So we can see here in this image, exactly in the center of wrist. This is the location. On the both side we can feel tendon. इन दोनों की इन इस पॉइंट के दोनों तरफ हमारा टेंडन पाया जाता है. So this pericardium 7 is one of the very important point. Okay. Which is on the wrist crease. Okay. Now, if we are coming in the elbow, we can see on the elbow, this is the location of the pericardium 3. ये हमारे pericardium 3 की लोकेशन है. So how to look at this point? So look at the elbow. First, we have to see one tendinous part in the elbow. Elbow में यहाँ पर बीच में एक tendinous part होता है. You can feel one tendon.
Actually, this is the biceps muscle, and there is a tendon of the biceps muscle coming here in the center of this wrist crease. If you keep a finger here and do like this, you will feel one very hard tendinous structure. Are you feeling it? एक रस्सी जैसा टाइट कड़क टेंडनस पार्ट फील हो रहा है. So that is the tendon of biceps muscle. Biceps muscle is this muscle. Okay. The meaning of tendon, who is connecting muscle with the bones? They call tendon. So this tendon is coming now. You can feel the tendon. Now you go to the ulnar side. Ulnar side means small finger side. If you go on the border of ulnar side, इसी में I will feel the tendon. So there are two sides. Thumb side is called radial side, and small finger side is called ulnar side. Why? Because this is the ulnar bone. So this is the ulnar side, and this is the radial bone. So this is the radial side. So we are going toward the ulnar side, means this side. Now we feel the tendon again. So this is the exactly on the border of tendon. हमारे टेंडन के बॉर्डर पर we will feel one depression, that is the location of pericardium 3. यानी pericardium 3 एल्बो क्रीज में है, टेंडन के बगल में है, एकदम टेंडन के बॉर्डर पर ही है, टेंडन की समाप्ति पर ही है. So we will feel this border, and after that we can keep our finger here and we can feel this point. It is a very important point, pericardium 3. So we found one point here, pericardium 7. We found one point here, that is pericardium 3. Okay. So pericardium meridian is going like this. पूरा का पूरा meridian हमारा ऐसे जाता है. So I will look at this point. This is the point. Pericardium 3. I will look at the point. This is the pericardium 7. So pericardium meridian is going like this. This is the pericardium meridian going exactly in the center. Okay. Now, I will take one more point in this line. So from the pericardium 7, if I go 3 chun or the 4 finger. So from the pericardium 7, अभी हमने आपको चुन के बारे में कुछ बताया नहीं ना, how to measure the chun? Not told you. Okay, so maybe next class only I will discuss about the chun, because chun is the very important and it is needed to measure any point. So from here we have to go 3 chun. From the wrist crease we have to go 3 chun. We can go with the help of 4 fingers. 4 finger is equal to 3 chun. So from here, if I go 4 finger or 3 chun, I have to locate one more point here, that is pericardium 5. So pericardium 3, 5 and 7. These 3 points important for me, 3, 5 and 7. The distance between these points are 3 chun. ये 3 चुन की दूरी है. Got it? Okay. The same thing I will show in the image here. So we can see here, this is the pericardium 3. On the wrist crease, we are having pericardium 7. From the pericardium 7, if I go 3 chun, then we'll find this is the pericardium 5. Okay. So now, in this way, we have seen 3 points here.
Pericardium 7, pericardium 5 एंड पेरिकार्डियम 3। हमें यहां पर 3 पॉइंट मिले। नाउ द पेरिकार्डियम मेरिडियन गोइंग इन द मिडिल फिंगर। हमारा पेरिकार्डियम मेरिडियन हमारी मिडिल फिंगर के पास जाता है। इन जनरल वी आर टेलिंग दैट दिस मेरिडियन एंडिंग ऑन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर। ये जनरल हम बोल देते हैं कि on the tip of middle finger this meridian is ending, but if you want to go very accurate, अगर आप इस पर बहुत ही accurate जाना चाहते हो, then you have to see here। तो फिर मैं आपको बताता हूं। then you have to understand here the pericardium meridian is ending, the pericardium meridian is coming like this, see, coming like this। so we are having multiple bones here। इसे क्या बोलते हैं? इस बोन का नाम क्या है? There are bones here। what is the name of these bone? These bones are called metacarpal। so the first metacarpal bone, second metacarpal bone, third metacarpal bone, fourth metacarpal bone, and the fifth metacarpal bone। Pericardium meridian is going in between second and third। so this is the root of the pericardium meridian from here। this meridian is going in between this second and third here। you can see here। in general we are telling that pericardium meridian are the energy of the central part। in general we are telling the lung are going this side, pericardium in the center, heart is going this side। in general we are telling the pericardium meridian is the meridian of central palm, okay, in general। but as per the TCM अगर हम इसका रूट देखते हैं तो ये इन दो मेटाकार्पल बोन के बीच में से जाता है। it is exactly not taking turn from here, it is going like this and taking turn from here and then going like that। so it is also covering the energy of the central palm। what is pericardium? pericardium is the covering of heart। pericardium क्या है? हमारे हार्ट की कवरिंग है। if we want to work on the heart, suppose someone is getting heart attack, we cannot control the heart attack with the heart point, but we can control the heart attack with the pericardium point। अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ा, आप हार्ट से उसे ठीक नहीं कर सकते अकेले, लेकिन आप उसे पेरिकार्डियम से ठीक कर सकते हैं। as per the TCM, heart meridian definitely connected with the heart, we will use some point of the heart also, but without the pericardium our protocol is 70% incomplete, okay। heart meridian is having more connection with the mind and emotions। हार्ट का संबंध मुख्य रूप से हमारे मन से है, हमारी वाणी से है, हमारे इमोशन से है। but the pericardium meridian having connection with the
heart, it's the covering of heart. And if we work on the pericardium meridian, even we can control the heart attack. Okay. So if we put the chandan, जो मंदिर में चंदन होता है ना, चंदन जो यहाँ लगाते हैं, take the chandan and put here with a little water. It also will cool the heart, because ultimately it is working on the pericardium. As you cool the pericardium, it will cool down your heart. If someone is having too much anxiety, someone is having too much problem with the heart, अगर आपको अपने हार्ट को, मन को भी शांत करना है, तो आप पेरिकार्डियम से कर सकते हो, राइट? सो इवन द आयुर्वेदा, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ तल हृदय मर्मा। आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, वी आर कीपिंग वन फिंगर हियर, द टू फिंगर ऑन द साइड, pressing it and just doing zigzag movement, and we are telling a very good point for the heart, and this is called tal hriday marma. So tal hriday marma here, tal hriday marma here. With the help of this, and with the help of feet, in the feet kidney 1 area, if we press the all 4.1, 2 and the feet kidney 1 area, we can immediately control if someone is having chest pain, someone is having any cardiac problem. So what I want to tell you, the central part is the area of pericardium. So the root of the pericardium is like this. It's going in between the second, third metacarpal bone. अब अगर मैं अपनी मिडिल फिंगर को फोल्ड करूं, if I fold my middle finger like this, see, I'm making the tight fist. If I make the tight fist here, now see, where is my middle finger? That is the pericardium 8. उसे हम कहते हैं pericardium 8. I have to make the tight fist, not the loose fist. Loose fist might go till here. I have to make the tight fist, neither very tight nor very loose. I have to make normal tight fist. So where this middle finger is falling, that is the location of pericardium 8. Make sure you are in between these two bones. आप इन दोनों बोन के बीच में हो. You have to feel the depression in between the second and the third metacarpal bone here. और यहां पर हमारी रेखाएं होती हैं. We know this is the, ज्योतिष में से क्या बोलते हैं, हृदय रेखा. इसे क्या बोलते हैं, मस्तिष्क रेखा. In the astrology, this is called heart line, and this is called brain line. So the pericardium is in between this heart line and the brain line here. The pericardium is in between these two bones here. Wherever this middle finger is going, so that is the location of pericardium 8. Pericardium 8 is very important point as per TCM. यह TCM में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसके माध्यम से हम एकदम बहुत सारी चीजों को काम डाउन कर सकते हैं. ओके, 1 minute. In some image, if you see, this point will be represented exactly in the center, like आप इस image में देखिए. If you see in this image, it's look like in the center. Okay. So it is look like it is exactly in the center. Fine. तो हम ये समझ सकते हैं कि the pericardium meridian also covering the energy of the center part, but exactly if you want to needle or stimulate the pericardium 8, you have to go in between these two fingers. Now, the pericardium 8 is going in the middle finger, फिर हमारी middle finger में जाता है. So because it is here, so it is going here in the middle finger and the ending on the middle finger. So I will show you. This is the last point of pericardium meridian, that is called pericardium 9 here.
ये हमारा कौन सा पॉइंट है? पेरिकार्डियम 9। सो पेरिकार्डियम 9 इज टुवर्ड इंडेक्स फिंगर साइड। दिस इज द लोकेशन ऑफ पेरिकार्डियम 9। अगर आपको इमरजेंसी के समय ब्लीड करना है, आप कहीं से भी ब्लीड कर सकते हो। यू कैन ब्लीड फ्रॉम हियर, you can bleed from here, you can bleed from anywhere, it will work. But as per the TCM, if you want to go exactly, then this is the location of pericardium meridian. And as per the Dr. Boole, this is the place for some other meridian. डॉक्टर बोल ने इसको किसी दूसरे मेरिडियन के लिए ले लिया है, तो ये तो छोड़ ही दो। पेरिकार्डियम मेरिडियन इज ऑन दिस साइड। गॉट इट? ये एरिया खाली था, तो जितने भी खाली पड़े थे ना सारे एरिया, सब डॉक्टर बोल ने ले लिए। एलर्जी मेरिडियन, nerve degeneration meridian, organ degeneration meridian. There are many meridian taken by the Dr. Boole. अगर आप में से कोई डॉक्टर बोल की स्टडी करता है तो उसे पता होगा कि इस फिंगर के दूसरी ओर हमारा और कोई मेरिडियन होता है। एंड दिस साइड वी आर हैविंग पेरिकार्डियम मेरिडियन राइट नाउ। सीआई तो पेरिकार्डियम का ही नाम है, सीआई और पेरिकार्डियम अलग अलग नहीं है। ओके, CI means circulation meridian and it is the name of pericardium meridian. 1 minute. ये देखिए, look at this. This is the allergy degeneration meridian on this side. Yes. So for the pericardium, which place is left? Only this side. So pericardium 9 point is located on this corner. This is the pericardium 9. Clear? तो इस तरह से हमने अभी पेरिकार्डियम के बारे में बात की। ओके, सो लेट्स डिस्कस 5 पॉइंट अगेन। आई डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, नाउ डू we will discuss from the sequence starting from the tip of the finger. Pericardium 9, that is the Wood point or the Jingville point. Wood point or the Jingville point. Pericardium 8, pericardium 8 will be the fire point or spring point. Pericardium 7 is the third number point, which is called Sioux stream point. Sioux stream point or earth point. Voodoo, fire, earth. Then we are coming to this point. From here, three chun, river point. So voodoo, fire, earth, and metal point. And the final, this is the water point. Voodoo, fire, earth, metal, water. Jingville point, Ying spring point, Sioux stream point, Jing river point, He sea point. Got it?
So there's a jingle point which we can use in the extreme condition. Extreme condition. Like sudden chest pain, sudden problem in the this chest area, in the pericardium area. This is the fire point. We have discussed the second point is very good point to expel the fire. If there is a too much heat in the heart or the chest area, we can expel with the help of pericardium 8. Third point, will balance the entire meridian. That is a switching point. The third point of the pericardium 7, having capability to balance the entire meridian. Then the fourth number point, the river point or the metal point. The river point having the area of the vast energy. रिवर पॉइंट वो होते हैं जहां पर vast energy है. If we stimulate this river point, we can bring the good flow of chi in the chest. Okay. हम छाती में एक ऊर्जा का एक बहुत ही शानदार फ्लो ला सकते हैं. If the person is having chest tightness or due to some emotional problem, there is a problem in the chest, with the help of this river point. If you remember, I told about the river point. आपको ध्यान है मैंने रिवर पॉइंट के बारे में बात कही थी कि रिवर पॉइंट थ्रोट और चेस्ट पर काम करते हैं. थोड़ा ध्यान करिए, है ना. रिवर पॉइंट थ्रोट एंड चेस्ट पर काम करते हैं. So pericardium meridian is having connection with the chest, connection with the heart, connection with the emotions. Someone is having tightness in the chest, tightness in the throat, emotional blockage, we can release with the help of pericardium 5. And this is the pericardium 3. ये हमारा यहाँ पर pericardium 3 point है. The pericardium 3 is the point for because energy is going deep down in the organ. So now energy is going deep down in the pericardium. Chronic problem, the heart, chronic emotional problem को हम यहाँ से workout कर सकते हैं. So in this way, pericardium is the meridian who is connected with the heart. That's why pericardium is the meridian who can treat deep emotional problem also. ये हमारी बहुत डीप इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. ऐसा कहते हैं कि जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो कौन ठीक कर सकता है? पेरिकार्डियम. सपोज हस्बैंड वाइफ ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर, हु कैन ट्रीट पेरिकार्डियम? सपोज कांग्रेस एंड बीजेपी फाइटिंग विद ईच अदर, हु कैन ट्रीट पेरिकार्डियम? Suppose India, China, India, Trump and Modi fighting with each other, who can treat pericardium? दो राजाओं के बीच के झगड़े, दो हस्बैंड वाइफ के झगड़े, पिता और पुत्र के बीच के झगड़ा, दो देशों के बीच के झगड़ा अगर आपको ठीक करना है तो पेरिकार्डियम से ठीक होगा. It is very clearly mentioned, if you treat the pericardium meridian, you can balance the relationship. आप रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं बिकॉज पेरिकार्डियम मेरिडियन इज द मेरिडियन हु कैन ट्रीट डीप इमोशनल इश्यूज. ये हमारा डीप इमोशनल इश्यूज को ठीक कर सकता है. सो पेरिकार्डियम 9 कैन ट्रीट एक्यूट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन, हार्ट अटैक. पेरिकार्डियम 8 कैन एक्सपेल द हीट और कभी कभी एकदम बर्स्ट आउट हो जाता है, गर्मी लगती है. With the help of pericardium, you can treat. Pericardium 7 can balance the entire heart and the emotion. Pericardium 5 can balance the chi in the chest. And pericardium 3 can treat the deep problem of the heart and the chest area. तो पेरिकार्डियम 9 को इसीलिए जब किसी को एकदम शॉक होता है ना, शॉक, शॉक जानते क्या होता है? यू आर शॉक्ड. शॉक कब होता है? शॉक्ड, यू आर शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, दिस हैपेंड विद मी. तो वो सडन हुआ ना शॉक, उसके लिए पेरिकार्डियम 9. शॉक क्या होता है? व्हाट इज शॉक? हीट, पेरिकार्डियम 8, है ना. या ट्रॉमा ऑल्सो, ट्रॉमा ऑल्सो.
So in this way, the pericardium is very, very important meridian for balancing emotional chi. ये हमारी इमोशनल ची को बैलेंस करता है। इसी मेरिडियन को अगर हम सुजोग में देखें, इन द सुजोग index finger is the arm and small finger is the arm. Pericardium meridian exactly going from the center. Pericardium meridian exactly center में होता है। ये देखो, ये पेरिकार्डियम मेरिडियन एकदम सेंटर में। So pericardium 3 will be at the elbow, center. Pericardium 7 will be at the wrist. Repeat again. 3 on the elbow. Pericardium 7 will be at the wrist. And pericardium 9 will be tip. तो नाखून के लगभग पास। This is the pericardium 9. Okay. Now from the pericardium, ये 7 है, इसे थोड़ा नीचे आए तो हमें 5 मिलेगा। This is the pericardium 5. ये हमारा pericardium 5 है। अब मैं आपको एक सुजोग का चार्ट दे। So now we'll show you the sujok chart here. Okay. In general, I have taken from Google. You can see here. The central line is the index finger. The tip is pericardium 9. We can see here. यहाँ पर जो tip है वो pericardium 9 है। The wrist, that is the pericardium 7. The elbow, pericardium 3. Let's come back to the 7. From the 7, we are going little down, that is the pericardium 5. तो देखो 6 भी है, 5 भी है। Actually 6 also very important point. We will discuss this later on. हम इसको बाद में समझेंगे। Okay. So this is the pericardium 5. Now we can see this is the pericardium 9 and the center is the pericardium 8. ये देखिए pericardium 8 here. Center of upper phalanges, pericardium 8. इसमें कुछ कंफ्यूजन है? एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको एग्जैक्ट जाना हो, यहां से यहां तक की दूरी 12 चुन की होती है। अब चुन क्या होता है वो अभी आपको मैंने बताया नहीं है। आई विल टेल डेफिनेटली इन नेक्स्ट 2 classes because it's a very basic knowledge. We should know what is chun. ये पेरिकार्डियम जो 5 है ना, यहां से कितना है? 3 चुन है। 3 चुन। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी इतनी है और ये सिर्फ 3 चुन है। So just while doing the imagination, you have to search the point. Suppose you are confused whether I am on the right or the wrong point. You have to take the support of one Jimmy. Then with the help of Jimmy, you praise the point and the real point will be little painful. That is called aha-see point. Aha. You press aha, see. That is aha-see point.
आ आहासी पॉइंट, उसे क्या कहते हैं? आहासी पॉइंट, कि जिसमें पेशेंट की आह निकल जाए, उसे कहते हैं आहासी पॉइंट. So real point will be little painful, and you can refer the chart, and while looking the chart you can look at the point. आप लोगों के पास जो सुजो के चार्ट होंगे, काइंडली शेयर इन द ग्रुप टू हेल्प ईच अदर. कई लोग ऑलरेडी सुजो की खूब प्रैक्टिस करते हैं. दे आर पुटिंग द सुजो पॉइंट. देयर आर मेनी पर्सन आर ऑलरेडी डूइंग. अगर आपके पास कुछ अच्छे अच्छे चार्ट्स हैं तो प्लीज उन्हें ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो उसको देखकर भी हम समझ सकते हैं. So we have seen in the finger it's a very easy. In the finger it's a, in the chest a very straight line in this area. Now the question comes whether this is more effective or this is more effective. The answer both are effective. I have tried both. Even this is working very fast. This is working very fast. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सोचे यार यहाँ पर ज्यादा पता नहीं इफेक्टिव है कि नहीं. Even this work very fast. I have tried for many patients. Okay. So this is the pericardium meridian. चलिए अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसे लिख के बता देता हूँ. So here in the short we can tell it. Sometime you will see very many sorts name. Number one name is pericardium meridian. In the short, sometime you will see it is written like this. Sometime you will see it is written like this. There's short name. In the short we are writing like this. This is the pericardium meridian. As per the Dr. Paul, he is writing CI. This is Dr. Paul. As per the Dr. Paul, it is called circulation meridian. तो डॉक्टर बोल कहते हैं कि अगर आपको सर्कुलेशन ठीक करना है तो पेरिकार्डियम को ठीक करो, बिकॉज पेरिकार्डियम मेरिडियन इज द सर्कुलेशन मेरिडियन, बिकॉज इट इज द कवरिंग ऑफ हार्ट. द थिंग्स विच हार्ट, even heart can't do, can be done by pericardium. The name itself is the circulation meridian. You want to do the good circulation in the lower body, middle body, upper body, you can improve with the help of pericardium meridian. Very important meridian. Suppose there is a good circulation in the lower part, below the diaphragm. There is a good circulation in the genital part, in the leg area. Okay. The sexual erection is happening just because of the blood. Erection किससे होता है? Blood से तो होता है. If there is a no good circulation, if the circulation is not good, if the circulation is poor, then even the person will suffer with the erectile dysfunction. In that condition also we have to think for the pericardium meridian, because pericardium meridian is the meridian who is responsible for circulation in the lower part, in the middle part of the body, in the upper part of the body. Okay, so pericardium meridian is very important meridian. Okay, so now, so there are 5 points. We know the first point is the pericardium 9, which is the good point. Second point is pericardium 8, which is the fire point. Third point is the pericardium 7, which is the earth point. Fourth point is the pericardium 5, which will be the metal point. The fifth point will be pericardium 3, which is the water point. Now,
The wood point also the jingle point, which is on the tip of finger. Then pericardium 8 is the yin spring point. Pericardium 7 will be the su stream point. Pericardium 5 will be the jing river point. And pericardium 3 will be the he see point. Okay, ये हमें ध्यान रखना होगा. With the help of pericardium 9, we can do the treatment of shock or emergency. With the help of pericardium 8, we can expel heat or improve heat. The improve heat means circulation. With the help of pericardium 8, we can improve heat. Heat means circulation. We can improve circulation. With the help of pericardium 7, we can balance the entire meridian. इसके माध्यम से हम पूरे मेरिडियन को बैलेंस कर सकते हैं. Right? So pericardium 7 is a very, very important point. Now pericardium 5 is the Jing river point. We can flow good chi in chest. Okay. We can remove emotional blockage from chest. Because river point is working on chest. हम जिंग रिवर के माध्यम से ही कर सकते हैं. And with the help of pericardium 3, the pericardium 3 is the very deep point. Deep point. We can work on the chronic problems. हम लंबी बीमारियां, chronic बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं with the help of pericardium 3. And this concept is same like other meridian. In the other meridian also, the jingle point will treat the extreme condition. Second point will expel the heat. Third point will balance the entire meridian. The fourth point will bring good chi in the throat and chest. And the fifth point, the last point, hisi point, will be working on the deep and chronic problem. ये बात प्रत्येक मेरिडियन के लिए लागू होगी. ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, चाहे वो कोई भी मेरिडियन क्यों ना हो. राइट? तो अभी हमने पेरिकार्डियम मेरिडियन समझा. हार्ट मेरिडियन और पेरिकार्डियम मेरिडियन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है. ओके. Like we have discussed the pericardium meridian, in the same way, heart meridian is going, but from the ulnar side. उसे भी समझ लेते हैं. अब lung, we already have understood the lung meridian previously. Now we discuss the 5 point of the pericardium meridian. हमने pericardium meridian के भी 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए. चलिए पहले मैं हार्ट मेरिडियन के 5 पॉइंट लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सिंपल है. So here, take the reference of pericardium meridian. I am drawing the 5 point of the pericardium meridian, pericardium 9, and I will also draw the heart meridian. Heart meridian we are showing with the HT, or we can show only H. ये दोनों इसके शॉर्ट फॉर्म. So heart 9. So pericardium 9 is the good point or the jingle point on the tip. The heart 9 also the good point or the jingle point. We will see the location very shortly. Then the pericardium 8, exactly the same is the heart 8.
द पेरिकार्डियम 8 इज द फायर पॉइंट, यह हमारा फायर पॉइंट है. दिस इज ऑल्सो द फायर पॉइंट. इट इज द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड यिंग स्प्रिंग. इट इज ऑल्सो द यिंग स्प्रिंग. तो कोई अंतर नहीं हुआ. देयर इज सेम. नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड. थर्ड इज पेरिकार्डियम 7 एंड हियर हार्ट 7. कोई अंतर नहीं है. सेम थिंग. So pericardium 7 is the third point, which is called earth point, because wood fire than the earth point or the Sioux stream point. Always remember the sequence. Jingvale sequence क्या होता है? Jingvale, Ying spring, Sioux stream, Jing river, and Hisi. And other sequences wood, fire, earth, metal, and water. Same sequence they are following. So the first point we have seen Jing Vale, second Ying Spring, third Sioux Stream, fourth Jing River, fifth Hisi. So the third point is the earth point here, that is pericardium 7. This heart 7 also the earth point और Sioux Stream. कोई अंतर नहीं है. Now the fourth number point is pericardium 5. Then fifth point will be pericardium 3. Okay. So the fourth number point will be, we know, metal point, and the last is the water point. Here also we know now the metal point will come, then the water point will come. So this point is Jing River, and the last point is the Hisi. So here also there is the Jing River, and the last one is the Hisi. So sequence is going same. Pericardium 9, heart 9. Pericardium 8, heart 8. Pericardium 7, heart 7. Pericardium 5, here heart 4. Only this is the difference. केवल इतना ही अंतर है. बस heart 4 हो गया. And the last one is the pericardium 3 and here heart 3. Same. कोई अंतर नहीं है. So in this way we have seen pericardium 9, heart 9, pericardium 8, heart 8, pericardium 7, heart 7, pericardium 5, heart 4, pericardium 3, heart 3. ये 5 पॉइंट हैं. wood, fire, earth, metal and water. So let's see the location. चलिए इनके एक बार लोकेशन देखते हैं. And the location of these points also very easy. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिर से हमारे रिस्ट जॉइंट से और एल्बो जॉइंट से. तो चलो एल्बो से स्टार्ट करते हैं. Because this is the meridian on the ulnar side. If I bend my elbow like this, you can see this elbow crease. आप यहां पर elbow crease को देख सकते हैं. So this is the end point of elbow crease. Here. This is the location of heart 3. ये हमारे heart 3 की location है. This one. Okay. We can't look at the heart 3 like this. If we want to look at the heart 3, bend the elbow, see the crease. आप elbow को bend करिए और फिर crease को देखिए. Okay.
So this is the point which is called heart 3. Got it? Now I will show you in the location. मैं आपको इस पॉइंट की लोकेशन दिखा दूं. Okay, let's see here. So we can see this is the location of heart 3 here. So the heart meridian is going like this. We can see this is the heart meridian. Okay. This is the heart 3. On the wrist crease, we are having heart 7. रिस्ट क्रीज में कौन सा पॉइंट है? हार्ट 7 का पॉइंट है. ओके. So it is exactly the same. We have seen pericardium 3 here and the pericardium 7 here. वही बात यहाँ है. Heart 3 here and the wrist crease we are having heart 7. Okay. Now here how to locate the heart 7? हम heart 7 को कैसे locate करें? It's a very important thing. हार्ट 7 को ढंग से समझिएगा. ओके. तो यहां पर जाइए आप सभी लोग. एवरीवन go in this side and keep your one finger here. Do zigzag movement. Can you feel one tendon here? क्या आपको यहां पर एक टेंडन फील होता है? How many person able to feel the one tendon? If you are not able to feel, do this movement. ऐसे करिए. आपको एक रस्सी जैसा फील होगा. You will feel this tendon. Okay. ये टेंडन के अंदर की ओर हार्ट 7 होता है. By mistake, if you are going on the outer side, this is not the heart 7. You have to feel this tendon. This tendon is called flexor carpi ulnaris. मसल का टेंडन है ये. इस टेंडन को फील करना है यहां पर. यू कैन फील लाइक दिस. फ्लेक्स योर हैंड, यू विल फील द टेंडन. इसके अंदर की ओर ये पॉइंट है. सो हार्ट 7 पॉइंट इज नॉट हियर. यहां नहीं है, इधर नहीं है हार्ट 7. Heart 7 point will be here in the inner side. इसे कहते हैं थंब साइड. कौन सी साइड? थंब साइड. तो थंब साइड मीन्स रेडियल साइड. तो इसे कैसे बोलते हैं? हम ऐसे बोलते हैं लोकेट द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल, गो टू द रेडियल साइड, देन यू विल फील द हार्ट 7 पॉइंट. एक सरल भाषा में से कह सकते हैं कि टेंडन को महसूस करो और अंदर की ओर चले जाओ. वही हार्ट 7 है. इसको लोकेट करना बहुत जरूरी है. बिकॉज हार्ट 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हार्ट 7 को हम शेनमैन बोलते हैं, शांति बिंदु. हार्ट 7 को ही शेनमैन बोलते हैं. द गेट ऑफ स्पिरिट, आत्मा का दरवाजा. द गेट ऑफ स्पिरिट. जब आपको शांति लानी हो, है ना, यू वांट टू ब्रिंग द पीस inside, then you have to take the support of heart 7. Heart 7 is a very, very important point, and it is balancing the spirit. ये हमारे हृदय की स्पिरिट को बैलेंस करता है, हमारे हृदय की शांति को बैलेंस करता है. हार्ट 7. गॉट इट? इट इज calming down our mind. हमने
पहले एक चीज समझी थी, आपको ध्यान होगा, शैन। शैन, शैन, हार्ट। शैन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ शैन इज द डिवाइन लाइट विच इज फिल्ड इन द हार्ट। कहते हैं कि हार्ट में क्या होना चाहिए? हार्ट में प्यार होना चाहिए। जैसे टाइगर के मन में उसके बच्चों के लिए बड़ा प्यार है, तो अभी आप निकल जाओ उसके सामने से, उसी प्यार के कारण वो आपको पकड़ेगा और अपने बच्चों के सामने डाल देगा, है ना? तो हार्ट में क्या होना चाहिए? हार्ट में प्यार होना चाहिए, हार्ट में नफरत होनी चाहिए। व्हाट शुड बी इन द हार्ट? हार्ट शुड बी एम्प्टी। इफ द हार्ट इज एम्प्टी, automatically divine light will come in the heart. The divine light is called Shan. Shen. Shan, उसे कहते हैं, वो होती है परम शांति। वही परम शांति है जिसकी खोज में सब लगे हुए हैं। और वो कहाँ है? वो हार्ट में है। ओके, सो द हार्ट सेवन इज द शैन मैन। हमारे कान में भी शैनमैन होता है ना, जो लोग ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर करते हैं वो जानते हैं कान में भी शैनमैन होता है। शैनमैन इज द वेरी गुड पॉइंट। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी कैन वर्क ऑन एंजाइटी, वी कैन वर्क टू टू हेल्प द काम डाउन द ब्रेन, द माइंड, वी कैन वर्क ऑन द ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। हम इन सब पर काम कर सकते हैं। हार्ट सेवन इज द मास्टर पॉइंट फॉर कामिंग डाउन द माइंड। हार्ट सेवन हमारे मन को शांत करने का मास्टर पॉइंट है। हार्ट सेवन। Person is not able to sleep because of lots of thoughts, lots of worry, lots of stress. We will put heart seven. Okay. Now we understood how to look at the heart seven. अब हार्ट सेवन के पास, हार्ट सेवन में 4 पॉइंट का ग्रुप है यहाँ, एकदम पास पास। मतलब हार्ट सेवन तो एक ही है, बाकी ये 4 पॉइंट का ग्रुप है। देखो, इन जनरल आई विल टेल यू, ये जो अंगूठा होता है ना, थंब, वी कैन सी द थंब, वी कैन सी दिस क्रीज ऑफ द थंब। सो दिस बिट इज कॉल्ड वंचुन। इसे क्या बोलते हैं? वंचुन। In the acupuncture, we are measuring the point with the help of chun. Because we cannot measure with a scale. Because if we are measuring for 3 years kid, तो उसका अंगूठा भी छोटा होगा। अगर हम एक छोटे, if we are measuring for kid, thumb will be according to the kid. If we are measuring for the 6 feet person, thumb will be according to the 6 feet person. So thumb is the measurement unit. This is called one chun. और इसका आधा कर दो तो क्या कहलाता है? हाफ चुन। In general, for adult, one chun is near about 1 inch. But I am telling near about, it's not fixed, क्योंकि सबकी हाइट अलग अलग हो सकती है। तो जो हार्ट सेवन है ना, वंस यू लुक एट द हार्ट सेवन, आधा आधा चुन की दूरी पर ये 4 पॉइंट का ग्रुप है। हार्ट सेवन, हार्ट सिक्स, हार्ट फाइव, हार्ट फोर। All the points just half chun, half chun, half chun. We can see the location here. हम इस इमेज में देख सकते हैं। I will show you the image. और ये चारों पॉइंट बहुत गजब के हैं, लेकिन अभी इसमें से हम बस ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट समझेंगे। So now we can see this is the heart seven. The 4 point group: heart six, heart five, heart four. The distance between each point is half chun. इनके मध्य की दूरी कितनी है? आधा चुन है। 0.5 चुन, 0.5 चुन, 0.5 चुन। This distance is 0.5 chun, this distance 0.5 chun, this distance is 0.5 chun. आप बता सकते हैं मुझे कि हार्ट फोर कितना दूर है? फ्रॉम द हार्ट सेवन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हार्ट फोर? बताइए, कितनी दूरी पर है हार्ट फोर?
So generally, it's a near about 1.5 June. So how to measure 1.5 June? इसको नापने का यही तरीका है कि हम ऐसे 2 अंगुल से नापते हैं। देखो, दिस इज 1.5 June. Okay. So we are going on the heart 7, then we are keeping 2 finger, we are reaching on the point that is the heart 4. मिल गया हमें हमारा पॉइंट हार्ट 4। तो हमें अपना हार्ट 7 भी मिला और हमें अपना हार्ट 4 भी मिल गया। So now we have got all the 3 points here. Now I will draw the line from here to here. यहां से लेके यहां तक लाइन ड्रॉ कर दो। दैट इज द हार्ट मेरिडियन। ये हमारा कौन सा मेरिडियन है? हार्ट मेरिडियन। आगे चल के इस पर हम पूरे पॉइंट समझेंगे। Look at these points, look at this point, draw the line, that is the heart meridian. But right now we have to discuss heart 3, heart 4, heart 7. यहां पर हमारे ये 3 पॉइंट हैं। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर। पहले हम लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन द टिप ऑफ इनर कॉर्नर, दिस द लोकेशन ऑफ हार्ट 9। ये हमारा हार्ट 9 है, जिंगवेल पॉइंट और द वुड पॉइंट। इसी पॉइंट का प्रयोग हम एक्यूट इमरजेंसी में करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम में करते हैं, हार्ट 9। तो हार्ट 9 पेरिकार्डियम 9 दोनों को लगा देते हैं। ओके ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ हार्ट 9। तो हार्ट का मेरिडियन ऐसे आता है, यहाँ से, बिकॉज हार्ट मेरिडियन इज कमिंग लाइक दिस। This is the heart meridian. Heart meridian is going like this. तो हमने यहां पर देखा था, this is the first metacarpal bone, second metacarpal bone, third metacarpal bone, fourth and fifth metacarpal. The heart meridian going in between fourth and fifth metacarpal bone. ये हमारी चौथी और पांचवी मेटाकार्पल बोन के बीच में से निकलता है, यहां से, है ना। In between this fourth and fifth metacarpal bone, the heart meridian is going, then going in the small finger. Okay. तो अभी हमारा जो लक्ष्य है, अगला पॉइंट है, इसका नाम है हार्ट 8। फिर से वही फॉर्मूला, उंगलियों को मोड़ो, जहां पर स्मॉल फिंगर टच करे वो हार्ट 8 है। बट मेक श्योर you are in between this and this metacarpal bone. Make sure you are in between these two lines. एक नीचे की लाइन है ब्रेन लाइन और एक ऊपर की लाइन है हार्ट लाइन, इनके बीच में हो। This is the location of heart 8 as per TCM. तो इसे ढूंढने का क्या तरीका है? पहले you have to search in between these two bones. ये आखिरी के 2 बोन के बीच में you bend your small finger where it touches the palm, that is the location of heart 8. ये हमारे हार्ट 8 की लोकेशन है। ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ हार्ट 8। ये देखिए, you can see in this image, little clarity will come. So we can see how the heart 8 point located in between fourth and fifth metacarpal bone here. ये इनके मध्य में स्थित है।
The In the same way, I will show you one another image for the pericardium meridian. पेरिकार्डियम कौन सी बोन्स के मध्य में है? विच मेटाकार्पल बोन? So we can see here in this image, this is the pericardium 8. So this is the fifth metacarpal bone, fourth metacarpal bone, third metacarpal bone, second and the first. In between second and third metacarpal bone, this is the location of pericardium meridian. Okay. तो यहां पर हमारा पेरिकार्डियम और यहां पर हमारा हार्ट है. Okay. So in this way we have to locate the heart. तो हम कैसे लोकेट करेंगे? बेंडिंग अवर फिस्ट where the small finger touches the palm, that is the location of heart 8. अब मैं इसलिए इतना बता रहा हूं क्योंकि कहीं आपने क्या किया, कोई ऐसे घुमा के पाम टच कर दिया, ऐसे उंगलियों को टेढ़ा करके पाम टच कर दिया, तो अलग कहीं पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे. तो थोड़ा पता होना चाहिए. वी हैव टू बी अवेयर दैट वी हैव टू बी इन बिटवीन दीज टू बोन्स, वी हैव टू बी इन बिटवीन दीज टू लाइंस. फिर टच करो. देन वेयर दैट फिंगर टच, दैट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट 8. ओके. तो हमने हार्ट 9 समझ लिया. वी हैव अंडरस्टूड द लोकेशन ऑफ हार्ट 9. ओके. And we have understood the location of heart 8. So the heart meridian is from going like this and ending here on the nail corner. Then heart meridian is here. So heart 9 is the wood point or the jingle point. We are using during the acute emergencies. Heart 9 का प्रयोग हम कब करेंगे? जिंगल पॉइंट, शॉक कंडीशन है ना, सडन इमरजेंसी, सडन कोलैप्स, एकदम से, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ फियर, some person is starting palpitation, because of some emotional thing, some person एकदम से उसका हार्ट में कुछ होने लगा. So during the shock, during the extreme condition, we can use a hard 9. Hard 9 is for sudden shock over the shen. जब भी सैन के ऊपर सडन शॉक हो जाए, कोई व्यक्ति एकदम से कोलैप्स हो जाए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन कोलैप्स, acute fear, we can use heart 9. Then the heart 8. Heart 8 point. Heart 8 point. Okay. Heart 8 point will clear the heart fire. ये हार्ट की फायर को क्लियर करेगा. एक्सपेल द हार्ट फायर. इट विल कूल डाउन द हार्ट. एंजाइटी, irritability, person is not able to sleep, restlessness, we can expel the fire with the help of हार्ट एट. हम हार्ट एट के माध्यम से हार्ट को कूल कर सकते हैं, इसकी फायर को फेंक सकते हैं. Then we are coming to the heart 7. Heart 7 we already told, that is the Shen man, the gate of spirit. It will regulate the Shen, cool down, calm down the mind. It will balance the entire heart meridian. So it will balance all the emotions. It will bring emotional stability. Because of the stress, because of overthinking, because of any emotional outburst, the person suffering with the problem in the mind, not able to sleep, unwanted fear, whatever, हम इसके मदद से पूरे हार्ट को बैलेंस कर सकते हैं. तो हार्ट 7 के बारे में वही लाइन आई विल रिपीट. इट इज द मास्टर पॉइंट फॉर कमिंग डाउन द माइंड, द हार्ट 7. देन वी आर कमिंग टू द हार्ट 4. जस्ट 1.5 टन डाउन, दैट इज द हार्ट 4. हार्ट 4 सिर्फ 2 अंगुल नीचे है, दैट इज द हार्ट 4.
Heart 4 is the river point because of the Jing whale, Ying spring, Su stream, and the river point. River point means the area of the vast energy will bring good flow in the heart. ये हार्ट में बहुत अच्छा फ्लो लेके आएंगे. It will remove unwanted emotional blockage from the chest, from the heart. There is tightness in the chest, palpitation, any problem in the chest, palpitation, breathlessness, shortness of breath, tightness of the breath. Some person is feeling heaviness in the chest. River point, river point को लगा. Then the last one is the heart 3. The river point means, sorry, Hisi point. The last point is the Hisi point, the water point. The Hisi point where chi go deep in the heart. Okay. So now we can work on the root level of the heart. Now we can work with the chronic problem of the heart. So any person is suffering the deep and the chronic problem of the heart, very old problem of the heart, long standing anxiety, always anxiety since 10 years, 20 years. Chronic palpitation, कि हमेशा 10 साल से palpitation हो जाता है बराबर. Now we want to treat some deep rooted disease, use the Hisi point. Okay. The problem of the insomnia since long time. So heart 3 means will treat deep heart problems. Okay. In this with a 5 point, heart 9 for emergency shock, heart 8 for heat, agitation, anxiety. Heart 7 will balance the shan, will calm down the mind shan man. Heart flow, bring good flow in the chi, heart or the chest. Heart 3 will work on the deep and the chronic problem. तो हमने कहा एक्चुअली टीसीएम में बड़े सुंदर नाम दिए गए हैं. इन द टीसीएम इट इज वी आर टेलिंग हार्ट इज द एम्परर. हार्ट एक राजा है. आपको मालूम सबके अलग अलग नाम है. लिवर इज द ग्रेट जनरल फाइटर. लिवर लड़ाकू है. हार्ट इज द एम्परर. गॉट इट. जो राजा होता है ना वो हर जगह नहीं जाता. वो वो बेचता है लोगों को. हर जगह नहीं जाता. He will send, okay, like we can see, the king is sitting on one place. He's sending this, okay, you are the finance minister, you are the agriculture minister. So he's having many different ministers. He's asking, okay, what's happened in the agriculture field, what's happened in the finance field, what happened in the this field and that field. तो जो राजा होता है वो एम्पर. हार्ट इज द एम्पर. ओके. एंड पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टर. पेरिकार्डियम क्या है? प्रोटेक्टर है. ओके. सबसे पहले तो वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ओके. तो हार्ट इज द प्लेस ऑफ डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट, वेरी प्योर एनर्जी, शैन, द प्योर शैन. ओके. हार्ट के पास क्या होता है? एक बहुत एकदम शुद्ध, एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी होता है. हार्ट जरा सी भी मिलावट हो गई तो हार्ट डिस्टर्ब हो जाता है. पेरिकार्डियम ऑल्सो डूइंग इमोशनल फिल्टरिंग इमोशनल फिल्टर. पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टर डूइंग फिल्टरिंग ऑफ द इमोशंस. तो हम कह सकते हैं कि हार्ट जब डिस्टर्ब होता है तो उसकी शैन डिस्टर्ब होती है. इट डिस्टर्ब द शैन. और पेरिकार्डियम डिस्टर्ब होता है तो इट डिस्टर्ब द इमोशंस. देखो हालांकि कनेक्शन दोनों का इमोशन से है, लेकिन शैन एक बहुत ही डीप चीज है. शैन, इज ए वेरी डीप थिंग.
आपने देखा ना, जब कोई, आपने कहीं देखी होंगी पिक्चर्स, when the person is meditating a lot, after some time some divine light is reflecting like this, that is shan. वो क्या है? shan है वो। पेरिकार्डियम पहले देखता है कि कोई भी जो इमोशन है, कैसे इमोशन आ रहे हैं, इट डू इमोशनल फिल्ट्रेशन। जैसे राजा के पास कुछ अनाप शनाप लोग आ रहे हैं, पहले पेरिकार्डियम उनको फिल्टर कर देता है, फिर राजा के पास आते हैं, देन दे आर कमिंग टू द किंग। ओके, सो emotional regulation is done by pericardium, and heart need always pure shan। हार्ट के पास एक तरह से आप देखें ना कि हार्ट एक अलग ही इंट्यूशन टाइप चीज है। हार्ट कहते हैं ना कि अरे हार्ट से काम, कई लोग हैं ना जो, many people are working from the brain and some people working from the heart। हार्ट से भी लोग वर्क कर सकते हैं, ब्रेन की जरूरत नहीं है ना। कई बार आई हैव सीन देयर आर मेनी पीपल, जब हम कान देखते हैं ना तो देखते हैं अरे तुम्हारा तो एंटी ट्रैगस है ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास तो ब्रेन है ही नहीं, क्योंकि वो एंटी ट्रैगस ब्रेन। तो मैंने क्या देखा कि एंटी ट्रैगस में ब्रेन, जो लोग ऑरिकुलर करते हैं वो जानते हैं, राइट। इन द ईयर वी आर हैविंग फुल बॉडी लाइक ए फीटस, सो वी आर हैविंग आर्म, वी आर हैविंग लेग, वी आर हैविंग ब्रेन। तो मैंने देखा जिसका ब्रेन ज्यादा होता है ना वो ज्यादा परेशान है। आई हैव सीन 100 people, more than 100 people, if the person is having more brain, he is suffering, and sometimes it is flat, no brain, he is very happy। he is very happy, even he is working at the very good post। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्यादा ब्रेन होता है ना, व्यक्ति खुद को ही, अपना ब्रेन अपने ही को मारने में यूज करता है। सो in this way heart and pericardium is very very important। Okay, so we have understood now। if we see the in the sujok, अगर हम सुजोग में देखें हार्ट मेरिडियन, so in the sujok we are drawing three lines, three vertical line: lung meridian, pericardium meridian, heart meridian। ओके, अभी मैं ऐसे थोड़ा बता रहा हूँ, बाद में इसको मैं एकदम प्रॉपर करेक्शन करूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ, जो लोग नए हैं वो लगाएंगे यहाँ इसे, कितना भी बताएं वो यहीं लगाएंगे इसको, यहाँ पे हार्ट मेरिडियन को। ओके, दोज हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग दे नोस, मैं बता रहा हूँ इधर। सो दिस इज द हार्ट मेरिडियन, दिस इज द हार्ट 3 ऑन द एल्बो, दिस इज द हार्ट 7 ऑन द रिस्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द टिप, ऐसे चढ़ के ऊपर तक, एकदम ऊपर तक, नियर द नेल्स, दैट इज द हार्ट 9, एकदम ऊपर तक आ गया तक, वो हार्ट 9 है। 3 पॉइंट, देयर इज नो कंफ्यूजन, हार्ट 3, हार्ट 7, हार्ट 9। Now from the heart 7 में the wrist, there is a Shanman point, the gate of spirit। We drop down little, that is the heart 4। यहाँ पर क्या है हमारा heart 4, just we have seen heart 7 and the heart 4 are very near। तो हम आपको थोड़ा इमेज भी जो आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा लगाना होगा। So heart 7, heart 4, just look at the image and put the point and palpate with the Jimmy। Oh, this is the RC point, painful point, tender point, or it means it is the right point।
And here this is the heart 9. So now we will see in the image. अब एक बार हम फिर से image में देखते हैं. Look at this image. So the heart meridian is going like this from here. Here we can see heart 3 on the elbow. Here we can see heart 7 on the wrist. On the tip we can see heart 9. So the mid of this upper phalanges we can see heart 8. Upper phalanges के बीच में हमें heart 8 मिल गया. और just if we go little below from the heart 7, that is the location of heart 4. ये हमारे heart 4 की location है. We can see here, this is the location of heart 4. Okay. So in the same way, we have to draw this point. तो अब हमें बॉडी में लगाना है कि सुजोग में लगाना है, हमारी चॉइस है. Because points available at both places. Okay. तो ये हमने क्विकली समझा. हमने लंग मेरिडियन पहले समझ लिया है. हमने पेरिकार्डियम हार्ट की बात की. अब हम कल की क्विज को सॉल्व करते हैं. सो क्विज नंबर कौन सी है जो हमें डिस्कस करना है? क्विज नंबर 3 डिस्कस करना है. ओके. क्विज नंबर 3. 2 3 दूसरी भी करना है. Okay. इसमें दिखाऊं क्या मैं कि आप लोग मोबाइल में देख रहे हो? दिखाना जरूरी है. क्विज नंबर ठीक है जी. क्विज नंबर 2. यही है ना क्विज नंबर 2, राइट? से दिस इज द क्विज ना which we have to discuss. Yes. Yes or no? Yes. So the question number 1, you can also unmute yourself to reply your answer. Okay. Or you can write in the chat box. Question number 1, the control cycle primarily function to Prevent excess. Prevent excess and maintain balance. C. prevent excess and maintain balance. The answer will be C. C. Question number 2, which is correct control cycle sequence? C, sir.
Wood, earth, water, fire, metal, wood. So the control cycle means it is jumping with one gap, okay? So Yes. grandmother grandson cycle. So the C will be the right answer. Wood is controlling earth. Earth is controlling water. Water is controlling fire. Fire is controlling metal. Metal is controlling wood. So answer will be C. Question number 3. Which element control earth in the control cycle? Wood. Wood. Answer will be C, wood. Question number 4. Mild stress, temporary affecting digestion, but resolving on its own represent. D. Normal control cycle. ये नॉर्मल कंट्रोल साइकिल है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गए तो लिवर ने थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया. इट इज द नॉर्मल कंट्रोल साइकिल. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5. किसी को कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो पूछ लेना. Question number 5. When liver stress severely damage digestion, which cycle is involved? C. Overacting. Overacting. तो जब liver stress बहुत बढ़ गया, there is too much liver stress now severely damaging the digestion, it means liver is over controlling the spleen and stomach. It is called overacting cycle. Question number 6. Which situation best represent a healthy control cycle? C. Short-term stress with temporary appetite loss. Temporary appetite A loss. chronic. देखो इसमें क्या लिखा है, हेल्दी कंट्रोल साइकिल. अब अगर हम एक एक करके देखते हैं. पहला, क्रॉनिक डाइजेशन डिजीज ड्यू टू स्ट्रेस. ये तो क्रॉनिक डाइजेशन है, Chronic. ये हमेशा ही बना रहता है ना. तो ये हमारा हेल्दी नहीं है. सेकंड, इमोशनल एंगर कॉजिंग डायरिया. स्ट्रेस में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस विद टेम्परेरी एपेटाइट लॉस. ये जो टेम्परेरी है ये हेल्दी हो सकता है कि इट इज टेम्परेरी. डी, डाइजेशन डिजीज कॉजिंग एंगर. तो इसका आंसर सी होगा. यहाँ पर क्या है कि विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट ए हेल्दी कंट्रोल साइकिल. इफ द पर्सन इज लिटिल बिट स्ट्रेसफुल विल बी गेटिंग टेम्परेरी एपेटाइट लॉस. आप स्ट्रेसफुल होते हो ना, आपकी भूख मर जाती है, फिर बाद में भूख लगने लगती है अपने आप. ये क्या है, ये हेल्दी कंट्रोल साइकिल है. ठीक है, इससे पता चलेगा कि स्ट्रेस मत करो, नहीं तो भूख मर जाएगी. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट हैपेंड इन द ओवरएक्टिंग साइकिल? 7. क्वेश्चन नंबर 7. What happened in the overacting cycle? B. Controller becomes Control strong. becomes Sir, excessively controller strong. The becomes controller has strong. become excessively strong. That is a B. Okay, very good. Question number 8. In the insulting cycle, which B. statement is correct? B. Controlled element Controlled rebels element against rebels controller. against controller. Insulting cycle means reverse control. इसमें controlled element rebels against controller. तो आंसर कौन सा होगा इसमें? B. B for Bombay. Question number 9. Long standing digestion, dampness, irritability and headache represent. Insulting cycle. Insulting cycle. Insulting cycle. Insulting, अगर किसी का डाइजेशन इशू है, डैम्पनेस बन रही है, द पर्सन देयर इज अ डैम्पनेस फॉर्मेशन, इट मींस अर्थ एलिमेंट अटैक काउंटर कंट्रोलिंग द वुड, रिजल्ट हेडेक एंड इरिटेबिलिटी. बहुत अच्छा, आप लोगों ने ये आंसर कर दिया, मतलब यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. क्वेश्चन नंबर 10. Which statement about the control cycle is correct? D. D. It is It is normal normal unless- unless excessive or reversed. तो इसमें है कि कंट्रोल साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कि विच स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोल साइकिल इज करेक्ट. इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, इट शुड बी ऑलवेज बी सेडेटेड, इट रिप्लेस द जनरेशन साइकिल, इट इज नॉर्मल अनलेस एक्सेसिव और रिवर्स्ड. Sir, D. 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 इसका It is आंसर normal होगा unless excessive or reversed. या, क्योंकि देखो हमने बात की थी जनरेशन साइकिल एंड कंट्रोल साइकिल आर द नॉर्मल साइकिल. जब वो ओवर एक्टिंग और इंसल्टिंग बन जाती है तब वो होती है पैथोलॉजिकल साइकिल.
तो इसका आंसर क्या होगा? डी। D. कंट्रोल साइकिल इज हेल्दी साइकिल। ओके, Yes, sir. तो ये हमारा हुआ क्विज नंबर 2। अब हम जा रहे हैं क्विज नंबर 3 की ओर। क्विज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, द ओवर एक्टिंग साइकिल अकर्स वेन, व्हाट इज द आंसर? C, sir. Controlling Control- element becomes excessively strong. Controlling element C. becomes excessively strong. C. C. सी आंसर होगा, C. द कंट्रोलिंग एलिमेंट बिकम एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़ गया कंट्रोलिंग एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ओवर एक्टिंग साइकिल? C. C. Would Would excessively excessively controlling controlling earth. Would excessively controlling the earth element is a classical example of controlling cycle, classical example of the overacting cycle. So answer will, question number 2, answer will be C, would excessively controlling earth. Question number 3, stress induced acidity, bloating and the loose stool indicate? would overacting and Would overacting on Overacting earth. on C. earth. Good overacting Good on earth. overacting on earth. इसका अर्थ है कि would overacting on earth. Very good. Question number 4, which cycle remain in the same direction as the control cycle but become pathological? overacting. Overacting. तो इसमें क्या है कि कौन सी साइकिल है रिमेन द सेम डायरेक्शन एज द कंट्रोल, कि कंट्रोल Overacting. साइकिल के Overacting. समान है लेकिन C. पैथोलॉजिकल है। सो व्हेन कंट्रोल बिकम ओवर कंट्रोल, राइट, ओवर एक्टिंग। तो इसमें C. क्या आंसर होगा? सी, दैट इज द ओवर एक्टिंग साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5, इन ओवर एक्टिंग साइकिल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इज टू? Reduce the Reduce the Reduce excessive the, control. reduce the controller. excessive controller. देखो अभी तो मैंने ट्रीटमेंट आपको सिखाया नहीं है तो इसको मैं थोड़ा इग्नोर करूंगा। इसमें लिखा ओवर एक्टिंग साइकिल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इज टू टॉनिफाई द चाइल्ड, टॉनिफाई द कंट्रोलर, रिड्यूस द एक्सेसिव कंट्रोलर। इसमें आंसर क्या होगा? Reduce the excessive controller. वैसे एक C. लॉजिकली है कि ओवर एक्टिंग साइकिल है तो जो कंट्रोलर है उसी को रिड्यूस करना होगा। सर जिसका मुझे क्वेश्चन ऑफ 3 का आंसर चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेस इंड्यूस एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड द लूज स्टूल इंडिकेट? अगर किसी को स्ट्रेस बढ़ा तो वुड ओवर एक्टिंग हो जाएगा और अटैकिंग ऑन द अर्थ, इससे ब्लोटिंग और लूज स्टूल हो सकता है उससे, है ना। स्ट्रेस के कारण वुड इज गेटिंग हाइपर एक्टिव, अटैकिंग ऑन द अर्थ क्रिएटिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। कमिंग बैक टू द फिफ्थ, तो फिफ्थ का हमने समझ लिया, रिड्यूस द, in the overacting Excessive cycle controller. Control. we will reduce the excessive controller. Let's come back to the sixth number, cold suppressing vitality leading to depression and low libido. क्या? B, sir. P. Water overacting Water on overacting on fire. जब water is overacting on the fire, water will kill the fire. Too much coldness will reduce the fire. Result, loss of vitality, depression and low libido. तो ये समझ नहीं आया। अच्छा, कोल्ड से प्रॉब्लम हो रही है ना सर? हाँ, क्या होता है ना Water कि overacting on मैं fire. आपको बता रहा हूँ, देखो क्या होता है ना कि लिबिडो के लिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए एक फायर की भी जरूरत पड़ती है। फायर, सर्कुलेशन, ब्लड। ओके, अगर मान लो किसी को आपने एकदम, इफ द पर्सन इज गेटिंग टू मच अटैक ऑफ द कोल्डनेस, उसके कारण उसकी पूरी फायर चलो खत्म के हो प्रोवाइड जाएगी, कर दे सामान। सर्कुलेशन वीक हो जाएगा, नहीं, इरेक्शन नहीं होगा 10 मिनट बाद। जेनिटल पार्ट में, बॉडी में। अभी क्या बात है? एक्चुअली व्हेन द Sir, पर्सन इज sir, we इंडल्ज, cannot hear what कोई you are इतना saying. Other people are मतलब खत्म talking. होने We वाली होगी can't 10 hear sir मिनट properly. so when the person indulge in the sexual activity, you can see body become warm. There is a circulation in the genital part, circulation in the lips, circulation on the face. Face become red. There is a blood is going to the breast in the female. So this is because of the fire. These all because of the fire. Okay. So that's why when the people are youth, they are having more fire, so they are having good reproductive capability. Okay. So that's why अगर एक्सेसिव कोल्डनेस के कारण किसी की फायर किल हो गई, यहां पर फायर का मतलब केवल अग्नि नहीं है, फायर का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन।
right? Without the blood circulation, even there is no erection in the penile part. So that's why fire is very much necessary for maintaining the good libido. You know, the people is having too much fire, liver fire. अगर किसी की बहुत ज्यादा liver fire बढ़ जाए, he might be getting too much an excessive sexual desire. उसकी sexual desire बहुत बढ़ जाती है. यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ध्यान साधना करता है ना, तो उसकी liver fire बढ़ती है. When the person is doing lots of meditation, lots of sadhana, they are going in the water. They are dipping in the water. Because unwanted fire, na, excessive fire will create, definitely it will burn the dhatus of the body. Even it might create unwanted desires. Okay. So it is very much necessary. The fire is very much necessary for sexual erections and for sexual desire. इसीलिए इसका आंसर है, if the cold is suppressing the vitality, अगर cold vitality को suppress कर रहा है, if cold is leading to depression and the low libido, what is the meaning of that? Water is overacting on fire. It is clear? Okay. So this was the question number 6. Now we are moving to the question number 7. देखो क्या होगा कि आप लोग जब अनम्यूट करते हो ना, तो आप लोगों के पीछे बैकग्राउंड में से भी कुछ आवाजें आने लगती हैं, वो क्लास को डिस्टर्ब करती है. तो अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाजें हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट मत करिए, ठीक है? उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, सबको समझ में नहीं आता. सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर, दोज हु आर हैविंग peaceful background, they can reply. They can unmute and they can reply. Okay, so now let's allow you for unmute. Yeah. So the question number 7, which clinical situation best fits with the overacting cycle? B. Temporarily appetite loss during stress. So temporary appetite loss during the stress. Okay, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस करना अच्छी बात नहीं है, इससे भूख मर जाएगी. So doing the stress will kill your hunger. So if you are stressful, there is a hyperactive mood which will damage your earth element and digestion. सर एक Question number क्वेश्चन है 8. इसके बारे में सर 7th में. सर Okay. टेम्पररी एपेटाइट लॉस ड्यूरिंग स्ट्रेस, ये तो कंट्रोल साइकिल होगी ना? Yes, sir. Even I am जो thinking. ओवर Okay, एक्टिंग you are right, साइकिल you are होगी वो right, तो you are right. क्रॉनिक be स्ट्रेस C. Which होगा. clinical situation C best fit होना with the overacting cycle? C. C होना चाहिए. Chronic stress causing, yeah, right. You are absolutely right. Chronic stress causing digestive damage. Yes. तो इसका आंसर क्या होगा? C होगा. Okay? Absolutely right. इसका Sir, आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर विल बी C. Chronic stress causing digestive damage. Yes. किसी ने और भी कुछ पूछा था? No. Question number 8. Overacting cycle is most commonly seen in C. C. Stress related disorder. stress related disorders. Stress related disorders, Very C. good. Question number 9. Which statement is true about the overacting cycle? C. 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 It is excessive control causing See, damage. excessive control causing damage. Excessive control causing damage. Excessive control causing damage. Question number 10. Which phrase best defines overacting cycle? C. Too much Too much control control. become harm. So too much control becomes harm. Okay. So control become over control. It is very harmful. Now we are moving to the quiz number next. Quiz number 4. तो क्विज नंबर 4 है हमारी. क्वेश्चन नंबर 1. इंसल्टिंग साइकिल इज डिफाइंड एज.
C. 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 Reverse Reverse control, control, Reverse where the where the control. controlled controlled element attacks element the controller. attacks the controller. So the C reverse control where the controlled element attack the controller. जब ग्रांड सन अपने ग्रांड मदर की इंसल्ट करे, when the grandson insulting the grandmother, so this is a reverse control cycle. Question number 1 answer will be C. Question number 2, which direction describe the insulting cycle? C. Opposite of of control the cycle, cycle. C. Opposite of control cycle Control. means C. Right. Question number 3, long standing digestive disease later C. causing anger and headache indicate. Insulting cycle. C. Insulting cycle, Yes. earth and wood. देखो उल्टा हो गया ना कि the person is having long standing digestive diseases, now start getting anger, irritability, headache. So it is an insulting cycle. Earth is affecting the wood. Good. Question number 4, insulting cycle usually indicate a condition that is. C. C. Chronic and severe. Chronic and C. severe. Chronic and severe. C. इंसल्टिंग साइकिल में कौन सी बीमारी होती है? Chronic. Chronic and severe. Chronic. And severe. Question number 5, which is the correct example of insulting cycle? C. 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 Earth rebelling Earth against wood rebelling due to against chronic wood dampness. due So to earth chronic dampness. rebelling against wood due to chronic dampness. Yes. So earth उल्टा wood को प्रभावित कर रही है because of the dampness. So this was the question number 5. Answer is C. Now question number 6. In the insulting cycle, the controlled element become C. Aggressive or C. C. rebellious. Aggressive or Aggressive and or rebellious. rebellious. aggressive and Rebellious. Okay. Question number 7. Which clinical pattern suggests insulting cycle rather than the overacting cycle? C. C. Digestive Digestive disease disease later later producing emotional instability. instability. So digestive disease means earth element later producing emotional instability. तो कहीं ना कहीं इसमें हम बात कर रहे हैं वही स्ट्रेस वगैरह लिवर इट इज हैविंग कनेक्शन विद द सो अर्थ एलिमेंट अफेक्टिंग द वुड. सो डाइजेस्टिव डिसीज लेटर प्रोड्यूसिंग इमोशनल इनस्टेबिलिटी. तो आंसर विल बी सी इज द एग्जांपल ऑफ इंसल्टिंग साइकिल. विच क्लिनिकल पैटर्न सजेस्ट इंसल्टिंग साइकिल? तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा ना? C. हाँ. Yes, Okay. sir. Question number 8. Which element relationship represent insulting cycle? C. Earth C. to wood. Earth Earth wood. to wood. Earth is affecting the wood. C. Question number 9. Treatment of insulting cycle usually require. C. 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 Gradual correction of of both both elements. Elements. इसमें क्या करना होगा? Quick sedation only, strong tonification only, gradual correction of the both element, ignoring the controller. क्या करना होगा? Gradual Gradual correction of both elements. Gradual ये हमने आपको correction of सिखाया both नहीं है elements. तो आपको वेट करना पड़ेगा. सर इसको आपने हम बताया था क्रॉनिक, क्या बताया था मैंने आपको? उसे यही बताया था कि Chronic इसमें conditions ऐसा नहीं में कर काम आता है सकते. ये. Chronic में दोनों करना पड़ता है. हाँ मैंने बताया ऐसे था. बोला था. ये हाँ, Insulting बता दिया and था. हाँ अगर सही बता बताया दिया था तो बोला आप था. लोग एक then सिर्फ नहीं, करने ऐसे से नहीं नहीं बताया. होगा, ऐसे बोला था. ओके फाइन. अगर बता दिया था तो ग्रेजुअल करेक्शन ऑफ द बोथ एलिमेंट. वेरी गुड. नहीं क्वेश्चन नंबर बताया. 10. Which one line statement best defines insulting cycle? C. C. See, When when long-term long-term imbalance imbalance leads leads to to rebellion. rebellion. जब लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस लीड टू रिविलियन, वही बात है, क्रॉनिक वाली बात होगी. कुछ एक पांचवी भी है ना? नहीं. नहीं सर, same. 4 ही दिए थे आपने. ओके नहीं 4 था. ही दिए थे सर सर. 4 ही दिए थे ओके आपने. डन. सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू. आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं. वेरी गुड. अब आपको समझ में आ रहा है ना कैसे स्ट्रेस हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करता है. सो व्हेन समवन इज कमिंग विद इंडाइजेशन, जस्ट डू नॉट थिंक ओनली स्टमक एंड स्प्लीन, आल्सो थिंक फॉर लिवर. उल्टा भी है ना? तो इसीलिए हमें whenever we are making any diagnosis, we have to think for all the 4 cycles. एक इसमें और भी अभी 1-2 लॉ और भी जुड़ेंगे. सर एक सम लॉ भी जुड़ेंगे. सर क्वेश्चन नंबर 4 सेम में. So insulting cycle usually indicates condition that is chronic and severe. So इसका एग्जाम्पल हम माइग्रेन ले सकते हैं. हाँ, yes, definitely yes. Yes. Any problem which is very chronic
and see various we can indicate. Which क्या होगा can कि be देखो due सपोज अर्थ एलिमेंट इज डिस्टर्ब, सम हाँ, पर्सन इज सफरिंग विद द indigestion हम्म, or there is a problem with of the dampness. Okay, so it is counter controlling wood. Wood means liver and gallbladder. So it will create migraine and headache because gallbladder and liver is having connection with the brain. आप जब लिवर गॉलब्लैडर मेरिडियन का रूट देखेंगे, हम अपने इस कोर्स में देखने ही वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि गॉलब्लैडर मेरिडियन पूरे ब्रेन को इंसर्कल करता है। लिवर और गॉलब्लैडर मेरिडियन का संबंध ब्रेन से है पूरा। लिवर इज हैविंग डायरेक्ट कनेक्शन विद द माइग्रेन। सर तो ऐसा लेकिन माइग्रेन तो दोनों में आ सकता है ना सर, ओवर एक्टिंग साइकिल में भी आ सकता है और इंसल्टिंग साइकिल में भी आ सकता है। जब लिवर अगर स्टमक को ओवर एक्ट करे तो भी लिवर तो यहाँ एंगराइज इंडाइजेशन हो रहा होगा, है। तो डाइजेशन और उसमें भी आ सकता है, राइट। इफ द लिवर इज वेरी हाइपर एक्टिव इट माइट क्रिएट हेड, इट इज अफेक्टिंग द अर्थ एलिमेंट। हम्म So the primary symptom indigestion, diarrhea, constipation और bloating, जो प्राइमरी सिम्टम जो होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इसको इस लिवर ने आक्रमण किया, ये हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे। लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या है आखिरकार। अब मान लो उस व्यक्ति के शरीर में बहुत डैम्पनेस है, डैम्पनेस बहुत है। डैम्पनेस को हम कैसे, डैम्पनेस, डर्टीनेस, हैवीनेस, ये हम समझेंगे कैसे, हम हाउ टू फाइंड आउट द पर्सन इज हैविंग डैम्पनेस। अगर डैम्पनेस बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि डैम्पनेस ने आक्रमण किया, यानी अर्थ एलिमेंट ने आक्रमण किया। तो देखो इधर बुध हाइपर एक्टिव है, ये आक्रमण कर सकता है। आक्रमण हमेशा उसी पर होगा जो कमजोर होगा, जो ताकतवर होगा उस पर आक्रमण नहीं होगा, है ना। उदाहरण के लिए लिवर हाइपर एक्टिव but earth element is strong, then liver cannot attack the earth element. किसी का स्टमक स्प्लीन मजबूत है, अर्थ एलिमेंट कैन नॉट अटैक, लिवर कैन नॉट अटैक। किसी भी एलिमेंट पर आक्रमण तभी होगा जब वो कमजोर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके फाइन। ओवर मच डैम्पनेस माना अर्थ एलिमेंट कमजोर है ना इसमें तो एक्चुअली क्या ऑलरेडी होता है डैम्प। कि हम अभी उसे एक अलग तरह से हम सोचेंगे कि सम पर्सन इज ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रीसी फूड, किसी का मान लो बुड नॉर्मल है, लिवर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिवर में। सम पर्सन ईटिंग लॉट्स ऑफ ग्रीसी फूड और लिविंग इन द डैम्प एटमोस्फियर, लिविंग इन द डैम्प हाउस और लिविंग इन द डैम्प सिटी, slowly slowly person is gathering the more weight, overweight, obesity, or because of anything, if the person is having more dampness in the body, तो हम बोलेंगे अर्थ एलिमेंट, हालांकि बिगड़ा हुआ अर्थ एलिमेंट है, okay, बिगड़ा हुआ अर्थ एलिमेंट। हाँ माना बिगड़ा हुआ अर्थ एलिमेंट लिवर को अटैक करेगा। अब क्या होगा, वो डैम्पनेस, डैम्पनेस का नेचर ही होता है ब्लॉकेज क्रिएट करना। द नेचर ऑफ डैम्पनेस, डैम्पनेस का मतलब है ब्लॉकेज क्रिएट करना। अब वो क्या करेगा, लिवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिवर कंट्रोल कर नहीं पाएगा क्योंकि डैम्पनेस इतनी हैवी हो गई है, हाई हो गई है, तो इट काउंटर कंट्रोल करने लगेगा उसको। इसे बोलते हैं इंसल्टिंग साइकिल, इस तरह से, है ना। फाइन। तो अब हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, अब हम मिलेंगे कल। सी यू टुमारो। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you very Thank you, much. sir. Thank you a lot.